Good evening, everyone. So today we are going to present the lecture of ECO 02 or MCS 225. Now you people might got confused that what is this MCS 225, or some people might get confused what is this ECO 02. So let me tell you that ECO 02. Let me tell you that ECO 02 is a BCA course. BCA course. BCA course. Okay, and MCS 225 is a MCA topic. Okay, MCA course topic. Okay, so what I'm saying, that means that this eco 02, this is of class 12th level, and this NCS 225 is 12th plus grad level, graduation level. So here what we did in this lecture, we have covered this 12th level topic. 12th level topic. Okay, we have covered this 12th level topic, which is specifically for ECO 02. And for the grad part we'll be having a different lecture, which will be specifically for MCS 2 to 5 students. So do not worry about it. But this 12th level, this topic is also important. Unless you know the concepts of accountancy, it is not possible to understand the higher concepts of accountancy. That is of grad level, graduation level. Let me tell you. So that's why we have come up with this lecture, and this is specifically for ECO 02. ECO 02, that is 12th level. So 12th level can, that ECO 02 BCA candidates should not get worried that what is that it is of your course or not. This is specifically for your course. And for the NCS 2 to 5, we'll be having one more lecture yeah, of theory, and we will be having two lectures. For NCS 2 to 5, there are three lectures in all. For NCS 2 to 5, we'll have three lectures. Okay, and ECO 02, we'll have two lectures in total. Okay, apart from this lecture, all the lectures will be different for ECO 02 and MCS 2 to 5. So do not worry about it. And whatever we'll be studying over here, we'll be doing in a smart way. Okay, because we do not have time to go through each and every study material, every block, and explain all the topics, or all the concepts one by one. We won't do like that. We'll be doing specifically keeping in mind that we have to do well in the examination, and whatever is important for examination. That's all. Because you people are computer science students, and computer science students, so what they will do with this accountancy part. I know, because they have to clear the exam, and my motive is that you should at least get 70 to 75%. Because yeah, me too. I am not an accountancy student or a commerce graduate. I am also a science graduate. Along with that, I did MCA, MTech. Okay, I did all these things. So that's why, yeah, this accountancy, whatever I'll be teaching, I'll be teaching, keeping in mind that without much laborious task, yeah, you can crack the examination. That's the thing. Because people from BC and MCA are requesting me again and again for these lectures, and I have requested few people, those who are from commerce background, but they are not keen to take the class. I do not know what the reason, but I have gone through the topics properly, and I whatever I will be teaching, that will be important from the examination point of view. That's all. Okay. Do not think that means I'll be teaching you accountancy from the class, that will be helpful in your CA examination, charter accountant, or something like that. कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए जितने अकाउंटेंसी की जरूरत है उतने मैं करवा दूंगा. And if you go through these lectures, two lectures or three lectures, whatever I told, that for eco there are two lectures. Two lectures if you are properly कर लो, so obviously you'll get 75 to 80%. That's my guarantee. I'm telling you. And for the NCS 2 to 5, there are three lectures. No, okay, and if you go through the series, that's more than enough. You don't need anything after that. So that's all. So without any further delay, we can start the lecture. Okay, so let's start. Please wait for a second. The first and the most important thing is, what is accountancy. We should know what is accountancy. ये definition जानना जरूरी है. Accountancy है क्या? ठीक है? It is the art. It is the art. I'm writing each and every definition. Okay, that is useful for you. It is the art of recording, classifying, and summarizing the economic information. And summarizing the economic information
economic information in a significant manner. In a significant manner. In a significant manner. Okay, in a significant and in terms of money. And in terms of money. In terms of money. In terms of money. Transactions and events. Transactions or events. One second. Or events. Or events which are of financial character. Which are of financial character. मतलब क्या है? What that is accountancy मतलब क्या? It is art of recording whatever economic information you are getting. Suppose I got 20,000 rupees. I am giving it to some person. Okay, and he is doing some work. So ये जो सारे information है, you write it in your diary. Whatever you do, you sometimes you record it in your brain also. But when the information is much more, then we have to record it somewhere. Okay, so that is known as accountancy. Understood? And especially in terms of money. इन टर्म्स ऑफ मनी कुछ और नहीं फ्रिज ले लिए रेफ्रिजरेटर ले लिए उसके तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट व्हाट टाइप ऑफ कंपनी और समथिंग लाइक दैट ठीक है इन टर्म्स ऑफ मनी कितने पैसे खर्च हुए वो पैसे के बारे में हमें लिखना है दैट्स ऑल ओके तो वो है अकाउंटेंसी सिंपल अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट इट इज a systematic way to keep systematic and complete records of financial transactions in the books of accounts in the books of accounts ठीक है दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग नंबर टू to ascertain the profit earned or loss incurred to ascertain the profit earned or loss incurred ये जो अकाउंटेंसी के से क्या होगा आपका वो जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से आपको प्रॉफिट लॉस सब कुछ दिखेंगे ऑटोमेटिकली ओके थर्ड इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट नंबर फोर टू प्रिवेंट फ्रॉड्स टू प्रिवेंट frauds by maintaining regular and systematic accounting records तो अब आपको क्लियर हो गया ये सारे तो कुछ बोला नहीं ये अकाउंटिंग से सब कुछ पता चल जाएगा प्रॉफिट अर्न हुआ या लॉस हुआ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट को वो आपका बुक देख के आपके सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है कोई कंपनी की फोर्थ क्या होगा फ्रॉड नहीं होगा फ्रॉड फ्रॉड क्यों नहीं होगा क्योंकि यदि आप सारे रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली रखा जाएगा तो फ्रॉड होने का कोई मीन्स देयर इज नो वे ओके नाउ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग limitations limitations of accounting number one data
is historical in nature. जो डेटा आपका होगा ना, दैट इज हिस्टोरिकल. ओके, जो भी आपको जैसे बैंक में वट एवर डेबिट क्रेडिट जो भी हो रहा है, तो ऑल द डेटा आर हिस्टोरिकल. ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन जब एट लास्ट क्या होता है, बैंक में जब 3-4 बजे जब आपका बैंक बंद हो जाए, तो उसके बाद दे कीप द रिकॉर्ड्स, दे मेक इट परमानेंट. या यदि कोई एरर आ जाए तो क्या हो गया, उसको सस्पेंस अकाउंट में रख के फिर उसका हिसाब दे हैव टू कैलकुलेट दैट फ्रॉम वेयर द अमाउंट हैज कम, ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो ये सारे क्या होता है, ये सारे बाद में होते हैं. मतलब क्या होगा, वो जो डेटा है वो हिस्टोरिकल हो गया, क्योंकि करंटली नहीं करते. करंटली वो एक टेम्पोररी कोई अकाउंट में रखते हैं, वट एवर इंफॉर्मेशन दे कीप इन टेम्पोररी अकाउंट, एंड आफ्टर दैट दे मेक इट परमानेंट. मतलब क्या होगा, तो दिस इज हिस्टोरिकल, डेटा इज हिस्टोरिकल, दैट्स द थिंग. नंबर टू, it contains those only those information. It contains only those information, only those information which can be expressed in terms of money, which can be expressed in terms of money, in terms of money. वही इंफॉर्मेशन रख देता है. और इसमें ये नहीं बताएगा जब व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ स्टाफ का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. दे आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग, दे आर जस्ट गोइंग टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट मनी ओनली, दैट्स ऑल. लेकिन ये सारे भी इंपॉर्टेंट होते हैं. क्वालिटी ऑफ स्टाफ, स्टाफ कैसे हैं, मैनेजमेंट कैसे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है क्या नहीं, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट दोज कैन नॉट बी केप्ट इन अकाउंटिंग. ओके, तो ये दो ही आपको याद रखो, ज्यादा जरूरत नहीं है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बुक कीपिंग. Bookkeeping. What is this bookkeeping? It is a record making phase of accounting. Records रखने के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रखने के लिए, दैट इज नोन एज बुक कीपिंग. सिंपल. लेट मी राइट इट. इट इज अ रिकॉर्ड मेकिंग फेज, is a record making phase. It is a record making phase of accounting. It is a record making phase of accounting which is concerned with the recording of, which is concerned with the recording of, with the recording of financial transaction, financial transaction, financial transaction and events, financial transaction and events relating to business. Okay, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज बुक कीपिंग. आप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, दोज आर टू डिफरेंट टर्म्स. ओके, आप बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, डिफरेंस पूछते हैं पेपर में. ओके, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज accounting? Let me write it. Bookkeeping or is it accounting? Bookkeeping क्या है? It is a recording phase. It is the recording phase of an accounting system. Accounting system. Accounting क्या है? It is a summarizing phase of an accounting. It is a summarizing phase of accounting system. अब क्या बोले यहाँ पे, रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग किसकी होता है? रिकॉर्डिंग तो लाइव डेटा, लाइव लाइव डेटा यू कैन से, लाइव फाइनेंशियल डेटा, वो रिकॉर्डिंग होता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा. सिंपल, ये सारी चीजें याद रखें.
Number third, it is routine in nature. It is routine in nature. एवरी डे होंगे ये होना ही है इस तरह से. ठीक है. नंबर थ्री, इट इज एनालिटिकल इन नेचर. एनालिटिकल एनालिसिस भी कर सकते हो आप, डेटा को देख के एनालिसिस भी कर सकते हो. ये फोर्थ, ये जो बुक कीपिंग है, इट इज डन बाय जूनियर स्टाफ. And this one is done by senior staff. It is done by senior staff. Okay. Number fifth, it does not give. It does not give the complete picture. The complete. The complete picture of the financial condition. Of the financial condition. It does not give the complete picture. और इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या होता है, पूरा complete picture मिल जाता है आपको. एनालिटिकल है, it gives the complete picture. It gives the complete picture. It gives the complete picture of the financial conditions. Of the financial conditions. Of the financial conditions of the business unit. Okay, so this is the difference. Hope आप लोग इतना तो क्लियर हो गए. ठीक है. Now next what we have to do, please wait for a second. कुछ टर्म्स है, डेफिनेशन है, अकाउंटिंग टर्म्स. ये इसमें बहुत सारे डेफिनेशन है, वो सब जानना जरूरी है. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. Okay, let me have a glass of water, then you can start. Please wait. Okay, so let's start. First is business transaction. What is a business transaction? Business transaction. Business transaction. What is that? It is a finance. It is an economic activity. It is an economic activity. It is an economic activity that affects financial position. That affects financial position. That affects financial position of the business. Of the business, and can be measured in terms of money. And can be measured in terms of money. Okay. It क्या business transaction क्या, it is an economic activity. Simple. That affects the financial position. उससे financial position क्या है, business transaction, वो सारे चीजें मेजर हो जाएंगी. ठीक है. That is also in terms of money. Number two, account. ये सारे इसलिए मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ ना, बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस. आप लोग अकाउंटेंसी का उतना नॉलेज नहीं है, तो फिर वी शुड नो द डेफिनेशन. ओके. तो फिर क्या होगा, कोई भी चीज होगा तो एटलीस्ट कोई भी डेफिनेशन, थ्योरी, कुछ भी, वट एवर क्वेश्चन कम्स, तो एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चन दे आर आस्किंग. अंडरस्टूड सर. यू शुड नो दिस बेसिक टर्म्स. ओके. अकाउंट. व्हाट इज दिस अकाउंट? इट refers to summarized record of relevant transaction. Record of relevant transaction
record of relevant transactions of particular head, a particular head at one place. Okay, समझ record और relevant transactions of particular head मतलब क्या होता है, एक डिपार्टमेंट की पूरे समराइज्ड डेटा माने इन टर्म्स ऑफ मनी है रखा जाता है, दैट इज नोन एज अकाउंट, सिंपल. नंबर थर्ड, कैपिटल. Amount invested by the owner. Amount invested by the owner. Amount invested by the owner in the firm is known as capital. उसको कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, एग्जांपल ले लो ना, सिंपल. ओनर की बात छोड़ो, जैसे एग्जांपल ले लो दैट मीन्स, लेट मी गिव एन एग्जांपल. जैसे आप लोग कहीं पैसे को आप ये करते हो, मीन्स एफडी में डालते हो, यू मेक एफडी ऑफ सम अमाउंट, तो दैट इज नोन एज द कैपिटल. उसके बाद जब आप आफ्टर पीरियड व्हेन यू गेट बैक द मनी ना, तो दैट इज नोन नॉट नोन एज कैपिटल, दैट इज नोन एज that is known as amount, what is the whatever capital you got plus interest, both you will be getting. Understood? So the other thing. So amount invested by the owner in the firm. So that is known the capital. जैसे 10,000 आपने डाले अकाउंट में for fixed deposit, so that is known as the capital. Simple. Number 4, drawings. Drawing मतलब क्या, पैसे विथड्रॉ करना. ड्राइंग मतलब क्या, मनी विथड्रॉइंग बोलते हैं, मनी विथड्रॉइंग, वो ये ड्राइंग, इसको ड्राइंग बोलते हैं. ठीक है. नंबर 5, एसेट. एसेट्स. एसेट्स का क्या होता है, एसेट्स आर वैल्यूएबल. एसेट मतलब ये होता है दैट इज वैल्यूएबल. ओके, एसेट्स आर वैल्यूएबल. वैल्यूएबल, एसेट्स आर वैल्यूएबल. ठीक है. तो एसेट्स को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है. यू कैन से नंबर 1 इज करंट एसेट. करंट एसेट. आप करंट एसेट किसको बोलते हैं, एग्जांपल ले लो, स्टॉक. यू कैन से करंट एसेट में यू कैन टेक स्टॉक, जिसको बेच के आप पैसे निकाल सकते हो. ठीक है, तो स्टॉक आपने रखा है, यू कैन सेल दैट स्टॉक एंड यू कैन गेट मनी, so that is asset. Okay. Number 2, non current asset. Non current asset. नॉन करंट एसेट मतलब क्या हो गया, एसेट विच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड. तो क्या होता है, एसेट्स विच आर होल्ड फॉर लॉन्ग पीरियड. और ये जो करंट एसेट है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड. ओके, ये लॉन्ग पीरियड के लिए. अब ऐसे ये जो है नॉन करंट एसेट, ये भी दो टाइप के होते हैं. वन इज टेंजिबल एसेट. टेंजिबल एसेट, आप एग्जांपल लो. टेंजिबल एसेट क्या है, विच आर फिजिकल, which are which have physical existence, physical existence. Okay, which are physical existence and can be seen, and can be seen. उसको देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो. एग्जाम्पल ले लो, फर्नीचर, मशीनरी. ओके, फर्नीचर बेच कर भी आपके पास पैसे आ सकते हैं, और मशीनरी से भी आपको पैसे आ सकते हैं, दैट्स थिंग. ठीक है, बेच के, तो वो एसेट ही है. नंबर 2, नंबर 2 इज इंटेंजिबल एसेट. इंटेंजिबल, इंटेंजिबल, एक सेकेंड, इंटेंजिबल एसेट.
अब इंटेंजिबल एसेट में क्या है? which have no physical existence, which have no physical existence and can be felt and can be felt by operation. Operation मतलब क्या होता है? ट्रांजेक्शन, फेल्ट बाय ट्रांजेक्शन, बाय ऑपरेशन और ट्रांजेक्शन, ऑपरेशन और ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल ले लो, फिक्स डिपॉजिट ले लो, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, गुडविल, उसके बाद पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है। पेटेंट मतलब क्या? आपने कोई चीज ये किया, व्हाट इज दैट नोन एज, मींस कोई यू हैव यू हैव इन्वेंटेड समथिंग और यू हैव क्रिएटेड समथिंग एंड यू मेड इट पेटेंट, वो उसकी आपकी कॉपी कोई नहीं कर सकता, दैट इज नोन एज ए पेटेंट, ठीक है। The trademark या goodwill, this will be discussing in some time, okay। so these are things, these are the intangible assets। अब एक होता है liability। एसेट क्या होता है? एसेट तो वैल्यूएबल होता है ना, लाइबिलिटी परेशान करता है। सिक्स, लाइबिलिटी, ओके, लाइबिलिटी, इट इज, इसको क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेशन और डेट। डेट मतलब क्या? तो उधारी, अंडरस्टूड। डेट, दैट एन एंटरप्राइज, दैट a company has to pay, that a company has to pay after some time in the future, ओके, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में भी दो टाइप है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी क्या है? करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी क्या है? ऑब्लिगेशन और डेट, ऑब्लिगेशन और डेट, ऑब्लिगेशन और डेट that are payable within it, that are payable within a period of 1 year। एक साल में आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज नॉन ए करंट लाइबिलिटी। एग्जांपल ले लो, इफ आई वांट टू टेक एन एग्जांपल, क्रेडिटर बिल पेएबल, क्रेडिटर्स बिल पेएबल, तो बिल देना है किसी को, ठीक है, तो बिल की पेमेंट करना, तो वो 1 ईयर का उसके पास टाइम होता है। नंबर टू इज नॉन करंट लाइबिलिटी, जो काफी दिन तक चलता है, नॉन करंट लाइबिलिटी, वो एक साल में नहीं, ओके, इट कैन बी फॉर ईयर्स, ओके, इट कैन बी फॉर ईयर्स, ओके। एग्जांपल ले लो, बैंक लोन, और एक ले लो डिबेंचर। शेयर्स और डिवेंचर्स आप लोग तो पढ़े होंगे, या मैं उसके बारे में भी आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, डिवेंचर के। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिसीट। सेवेंथ इज रिसीट। रिसिप्ट आप लोग बोलो, दैट इज नोन एज रिसीट, इसको रिसीट बोलते हैं। अब इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट, एक होता है कैपिटल रिसीट। एक होता है रेवेन्यू रिसीट, रिसीट। अब रेवेन्यू रिसीट क्या है? रेवेन्यू रिसीट क्या है? आर दोज रिसीट्स which are occurred by normal, occurred by normal operation, by normal operation of business, like money received by sale, like
मनी रिसीव बाय सेल, बेच के पैसे आया तो उसको दैट उन्होंने रेवेन्यू रिसीट। ओके, एंड नंबर टू इज कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट, ये जो मैं वट एवर आई एम डिस्कसिंग ना, ये जो इतनी सारे डेफिनेशन आई एम डिस्कसिंग, ये आपका कॉन्सेप्ट, दीज थिंग्स आर बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, ओके, सो दैट ऑफ अकाउंटेंसी। ये सारे डेफिनेशन आपको आएंगे तो फिर यूर, तो फिर क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन प्रॉपरली, क्या व्हाट द क्वेश्चन वांट्स टू से। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इन द अपकमिंग लेक्चर्स, तो फिर इसमें इजीली समझ में आ जाएंगे, इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली, दैट्स द थिंग। तो आई एम बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट्स। और आप लोग, इफ यू लाइक द लेक्चर, इफ यू डू लाइक द लेक्चर, or if you do not like the lecture, please do comment on the comment section. According to that only we will be coming with the second lecture, let me tell you. Okay, now next is capital receipt. ये क्या है? Capital receipt क्या है? Are those receipts which are occurred by other than, which are occurred by other than business operation. business operation business operation, जैसे क्या होता है, लाइक other than business operation, ये क्या है? ये this is a business operation, money received by sale, but this is not a other than business operation। हाँ ठीक है, other than business operation, हाँ, तो that is known as capital receipt। कुछ भी हो, it can be anything, business नहीं है। Understood? Then we are going to discuss about expense, then expenditure। expense मतलब क्या होता है? खर्च। eight, expense। expense मतलब क्या होता है? cost incurred by business, cost incurred, जितना खर्च किया बिजनेस में, जितना खर्च हुआ बिजनेस करने में, तो वो पैसे खर्च होते हैं ना, दैट इज नोन एज एक्सपेंस। दैट यू कैन राइट, कॉस्ट इनकर्ड बाय ए बिजनेस, फॉर अर्निंग रेवेन्यू। जैसा एक बिजनेस करे तो वहाँ पे क्या, चाय के खर्चे होते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद पेपर के खर्चे होते हैं, दैट पेपर, देन प्रिंटिंग के खर्चे होते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर आते हैं, सैलरी होते हैं, ओके, लॉट्स ऑफ थिंग्स, तो दीज आर द एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड? एग्जांपल ले लो, रेंट, एक ऑफिस का रेंट होते हैं, उसके बाद वेजेस, सैलरी, सब जो लोगों को देते हैं, एम्प्लॉयज को, उसके बाद होते हैं सैलरी, हाँ, उसके वेजेस, उसके बाद इंटरेस्ट, एक्सेट्रा। नाइन्थ इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, अब एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता है? स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग लाइबिलिटी। स्पेंडिंग, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस है, आपको, आप देखो, प्लीज गो थ्रू द डेफिनेशन दैट आई एम राइटिंग। स्पेंडिंग मनी और इनकरिंग ए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल ले लो, सपोज आपको, आपके वहाँ पे मीन्स आपके ऑफिस में यू आर बाइंग 10 लैपटॉप्स, तो वो एक्सपेंडिचर में आ गया, वो एक्सपेंस में नहीं है। एक्सपेंस मतलब क्या होता है? एक्सपेंस मीन्स यू कैन से एवरी मंथ, वो एवरी मंथ। एक्सपेंडिचर क्या होता है? व्हेन एवर रिक्वायर्ड, व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत होता है तभी वो जो खर्च करते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर। जैसे टेबल खरीदने ऑफिस के लिए, या आपको बल्ब, उसके बाद सपोज सोच लो, यू आर बाइंग प्रिंटर, ओके, तो दोज आर ऑल एक्सपेंडिचर, ओके। वो एवरी मंथ आप, यू आर नॉट गोइंग टू बाई एवरी मंथ, ओके। और एक्सपेंस क्या होता है? एवरी मंथ जो होते हैं, दैट इज एक्सपेंस। होप आप क्लियर हो गए। प्रॉफिट लॉस ये तो आपको पता है, दैट आई एम नॉट राइटिंग ओवर देयर, ओके।
उसके बाद गुड्स 10 गुड्स। अब गुड्स क्या है? द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट्स in which the business deal in which the business deal in, उसको गुड्स बोलते हैं। उसके बाद परचेज, परचेज क्या होता है? परचेज मतलब इट इज यूज ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल, उसको परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज में भी कैश परचेज और क्रेडिट परचेज, या इट इज यूज ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस फॉर रीसेल, रीसेल करने के लिए जो चीज हम खरीदते हैं, दैट इज परचेज। लेट मी राइट इट, परचेज, इट इज यूज ओनली, it is used only for the goods procured, goods procured, only the goods procured by business for resale, resale। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो। जो डीलर्स होते हैं, कार या बाइक के डीलर होते हैं, वो क्या करते हैं? कंपनी से लेते हैं प्रोडक्ट, वो लेते किस लिए? रीसेल करने के लिए। वो उसने खरीद लिया, अब कंपनी ने क्या किया? उसको सेल किया। फिर वो सेल करने का वो वट एवर द कंपनी हैज सोल्ड, उसको फिर सेल करते हो, तो दैट इज नोन एज रीसेल। तो उसको क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं, सिंपल। इट इज यूज ओनली फॉर द गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस फॉर रीसेल, फिर बेचने के लिए, दैट इज नोन एज रीसेल। ओके, दैट इज नोन एज द, यू कैन से परचेज। अब परचेज रिटर्न एक होते हैं, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। मुझे अब मैंने एक डीलर हूँ, आई एम ए डीलर, आई बॉट फ्यू कार, उसके बाद मैं उसको सेल करूंगा, एंड इफ द कार इज नॉट गुड, क्वालिटी ऑफ कार इज नॉट गुड, मैं क्या करूंगा? उसको रिटर्न कर दूंगा, तो दैट इज नॉट एज परचेज रिटर्न। ओके, तो क्या होगा? व्हेन परचेज गुड्स, व्हेन परचेज गुड्स, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, आर रिटर्न टू द सप्लायर, व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सप्लायर, आर रिटर्न टू द सप्लायर, उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। 13, सेल्स। अब सेल्स क्या है? Sales are total revenues. Total revenues. Sales are total revenues. Sales are total revenues. Sales are total revenues from goods sold. From goods sold. इसको बोलते हैं सेल्स। अब 14 में सेल्स रिटर्न एक टर्म होता है, सेल्स रिटर्न। ये सब बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स है, तो यू शुड नो दीज टर्म्स। When sold goods are returned from customers. Returned from, I'm not saying by, from customer. From customer. Due to any reason. Due to any reason. जैसे कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले, देर वाज ए देर इज हाइप, जब फोन में आग निकल रहे, आग ब्लास्ट हो रहे, फोन आर ब्लास्टिंग। ओके, कुछ कंपनीज की फोन में इश्यूज आ रहे थे, तो व्हाट द कंपनी सेड, जो व्हाट एवर फोन यू हैव सोल्ड, प्लीज टेक बैक फ्रॉम द कस्टमर। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट, वी आर गोइंग टू गिव देम न्यू फोन। वो जो इशू है, इशू को सॉल्व करके वी आर गोइंग टू गिव देम न्यू फोन। तो जो उन्होंने क्या किया, कस्टमर से रिटर्न लिए। द कंपनी इज टेकिंग रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर, द कस्टमर्स आर नॉट रिटर्निंग, उसको बोलते सेल्स रिटर्न। Then 15, debtor, DBTOR, debtor। अब debtor क्या है? Are persons, debtor are persons,
or entities. Debtors are persons or entities. Or entities to whom business has sold, to whom business has sold goods. Business has sold goods. ठीक है, ऑन क्रेडिट, उधारी में किसी को कुछ देंगे, दैट इज नोन एज डेटर, उसको डेटर बोलते हैं। कीप इट इन माइंड। नंबर 16, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है? इफ द बिजनेस if the business if the business buys goods or services or services हाँ, if the business buys goods or services on credit and amount is still to be paid and amount is still to be paid and amount is still to be paid to the person or other entities। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। दीज आर लाइबिलिटीज फॉर द बिजनेस, इसको क्या बोलते हैं? दीज आर लाइबिलिटीज। दीज आर these are liabilities। ये लाइबिलिटीज फॉर द बिजनेस। क्यों? उसने उधार में प्रोडक्ट को लिया है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। वाई? क्योंकि उसको देना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन बन जाता है, दे हैव टू गिव द मनी विद इन टाइम, फिक्स टाइम। देन देयर इज वन मोर, बिल रिसीवेबल। 17, बिल रिसीवेबल। ओके, दीज डेफिनेशंस, वट एवर द डेफिनेशंस वी आर गोइंग, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, डिटेल में चलते हैं, ठीक है, और इसको करते हैं। ठीक है, दिस टर्म्स, जो भी टर्म्स है उसको मैं थोड़ा और आगे जाके हम विल स्टडी दिस थिंग्स। ओके, प्लीज वेट फॉर अ सेकंड। Then we will be starting with what is single entry system, double entry system, ये सारे हम लोग बातें करेंगे। What is single entry system? This is important। Single entry system। अब single entry system क्या है? It simply refers simply refers to incomplete records, refers to incomplete records, incomplete records, or the incomplete records, you can say, or the defective double entry system। डबल एंट्री सिस्टम। अब क्या डबल एंट्री क्या है ये देखेंगे। ओके, इसमें क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? ऑल द ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड, ओके, और मेंटेन। ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? ऑल द ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड और मेंटेन। ओके,
आप डबल एंट्री में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल सिंगल एंट्री का, यू कैन टेक एन एग्जांपल। पहले जमाने में मीन्स ईयर्स बैक, मीन्स 60-70 ईयर्स बैक, क्या होता था, एक एक बंदा होता था मुनीम जिसको बोलते थे, मुनीम, यू हर्ड द टर्म मुनीम। मुनीम मतलब एक बंदा होता था, एक बड़ा सा बुक लेके बैठे रहते थे, एंड ही यूज्ड रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। अच्छा वो किसी बंदे को पैसे देने हैं, तो ही गोइंग टू राइट डाउन द रिकॉर्ड। अब उसी अकाउंट जो पैसे उसके पास होते थे, उसी से क्या किया उसने, अपने जो मालिक है, जो बॉस है, उसके बेटे को 5 रुपए दे दे, जाओ चॉकलेट खा के आओ, ठीक है, बट दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। तो ये इस तरह का होता था, वही खाता जिसको बोलते थे। तो ये सारे जो चीज, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते थे। वहां पे तब लैपटॉप और कंप्यूटर या अकाउंटेंसी बोल के कोई पेपर नहीं होते थे, अंडरस्टूड। तो वहां पे क्या होता, वही खाता में क्या होता था, जो गरीब लोग जो वो पैसे लेके जाते थे इंटरेस्ट पे, उसके बाद उसके खाते में सारे डेटा इज बिंग रिकॉर्डेड। ओके, उसके बाद अपने उसके घर के कोई बंदा, उसके घर के कोई बंदा यदि 10 रुपए 5 रुपए ले लिया, तो दैट इज नॉट रिकॉर्डेड ओवर देयर। तो इस तरह का जो वट एवर जो ट्रांजेक्शन है, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, कीप इन माइंड। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। अब डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डबल मतलब क्या, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री मतलब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, तो दो एस्पेक्ट होते हैं, क्या होता है, नंबर वन रिसीविंग एस्पेक्ट, जो पैसे मिल रहे हैं, दैट इज रिसीविंग। राइट होता है गिविंग, गिविंग एस्पेक्ट। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो उसको क्या बोलता है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंपल। तो आप लोग किए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। So before going to the suspense account, let us define what is an account. That would be better. Then define types of account. Then we are going to discuss about suspense account. Suspense account is the account that is involved in banking. Actually, in the banks, the suspense account is an account that is in bank, not it's not personal. Okay, so let us discuss accounts first. What is account? Accounts. So let us discuss what is account. Please wait for a second. Accounts are accounts are fundamental building blocks. Fundamental building blocks used to record, used to record, classify, summarize financial transactions. Okay, so what is account? Account is used to record कोई भी financial transaction that can be record, classify, summarize financial transaction. Now what is classify? So classifying finance, classifying accounts is a different thing. Okay, that we are going to discuss now. Now different types of accounts. One is personal account. What is personal account?
जैसे आप लोग के अकाउंट है बैंक में, तो दैट इज पर्सनल, दैट्स ऑल. सेविंग्स अकाउंट यू कैन से, लाइक कृष्णा is a person, that's an account in the bank. Gopal, Javed, Anthony, Anthony, डॉट डॉट डॉट. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके अकाउंट्स है बैंक में, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट. एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट, दैट इज नॉट पर्सनल. तो इम्पर्सनल अकाउंट में क्या क्या है? रियल अकाउंट, नंबर वन इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट एंड वन इज नॉमिनल अकाउंट. I will be giving you the example, then we will be discussing these accounts also. Okay. First, let me give an example. So you will have a view of it. Like real account में क्या आएंगे? एग्जाम्पल ले लो. फर्नीचर, यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स थे. फर्नीचर, बिजनेस के लिए फर्नीचर की जरूरत होता है. फर्नीचर. ओके. बिल्डिंग्स, मशीनरी, व्हीकल्स. और नॉमिनल अकाउंट में क्या है? सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन. Okay. Now we'll be discussing these different types of accounts. Okay, in detail. Let us go through that. First, we'll be discussing this रियल अकाउंट. पहले रियल अकाउंट के बारे में बात करें, क्योंकि यू मस्ट बी कंफ्यूज विद द रियल अकाउंट. तो विल डिस्कस रियल अकाउंट्स फर्स्ट. रियल अकाउंट. रियल अकाउंट. So what is real account? Let us see. These accounts represent, these accounts represent assets, liabilities, assets, liabilities, and equity. And equity of a business. Okay. These accounts represent, जैसे ये क्या है? You can say these are the assets: furniture, building, machinery, vehicles. These are the assets. Okay, of a business. Okay. Now let me discuss this one more. Okay. These accounts represent assets, liabilities, and equity. Liability में क्या होंगे? Liability में you can say assets में क्या होता है? Furniture, 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 buildings, machinery, vehicle. और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको बेच के आप क्या कर सकते हो? यू कैन गेट मनी. So that is an asset. Okay. Now liability. Liability में ले लो लोन. Okay. You can say loan. Okay. Debt, बाहर से किसी से लिए. तो इस तरह के जो है इसको बोलते हैं लाइबिलिटी. होप इतना क्लियर हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द इक्विटी. अब इक्विटी, अब इक्विटी क्या है? इक्विटी इक्वल टू, पहले मैं मैथमेटिकल टर्म देखो, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूँ. मैथमेटिकली इक्विटी इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. जो पैसा बचते दैट इज नोन एज इक्विटी. होप आपको क्लियर हो गया. एसेट है, एसेट सपोज 20,000 है और लाइबिलिटी है 15,000 की. तो जो बचे 5,000, दैट इज एन इक्विटी. होप आप लोगों को क्लियर हो गया. ओके. So this is the thing. Now we understood the real account. Now nominal account भी clear है. I think the nominal account is also clear.
बिकॉज में वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन जो भी आएंगे दैट इज नॉमिनल। का पर्सनल अकाउंट तो क्लियर है। तो होप मैंने क्लियर कर दिया सारे बात। ओके, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सस्पेंस अकाउंट। शुड गो विद द सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। ओके, अब सस्पेंस अकाउंट क्या है? सपोज एग्जांपल ले लो कुछ, मैं सपोज देयर आर सो मेनी ट्रांजैक्शंस इन बैंक, सम ट्रांजैक्शन इन बैंक, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कोई अमाउंट की इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। तो क्या हुआ, तो वो जो अमाउंट है उसको हम क्या करें, सस्पेंस अकाउंट में पहले डाल देते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, जब बैंकिंग आवर्स ओवर हो जाएंगे तो फिर हम उसको देखेंगे कि कहाँ से ये अमाउंट आए, या कहाँ से अमाउंट, कहाँ अमाउंट गए, ऑल दिस थिंग्स। तो कैन बी सीन आफ्टर द बैंकिंग आवर्स। तो वो क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। तो व्हेन टू यूज सस्पेंस अकाउंट, व्हेन टू यूज सस्पेंस अकाउंट, तो समझ गए, सस्पेंस जिसमें सस्पेंस है, पता नहीं ये कहाँ से क्या है, दैट इज सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो व्हेन टू यूज सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, नंबर वन, मिसिंग इन्फॉर्मेशन। मिसिंग इन्फॉर्मेशन दे दिए, कोई इन्फॉर्मेशन, यू रिसीव ए पेमेंट बट द इनवॉइस नंबर ऑफ एनी रेफरेंस नंबर डिटेल्स इज मिसिंग, इनवॉइस नंबर इज मिसिंग। तो इस तरह का कुछ है, तो फिर क्या करेंगे, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। नंबर टू, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी क्या होगा, द इनकंसिस्टेंसी इन इनवॉइस, इनकंसिस्टेंसी इन इनवॉइस। मैंने ऑर्डर किया 10,000, ठीक है, 10,000 की वो चीज है, एंड द इनवॉइस इज सेइंग दैट इट इज ऑफ 8,000। ओके, तो इस तरह का जैसे डिस्क्रिपेंसी इज है, या मिसमैच यू कैन से, इनकंसिस्टेंसी और मिसमैच यू कैन से, तब क्या होता है, उसको हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। एंड नंबर थ्री इज अनआइडेंटिफाइड सोर्स, अनआइडेंटिफाइड सोर्स, अनआइडेंटिफाइड सोर्स, हमें पता नहीं है कहाँ से वो अमाउंट आया है। ओके, तो क्या बोलते हैं, दैट इज ए, तो उसको क्या करते हैं, हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। यू रिसीव कैश, you receive cash or a check, or a check from an unknown source, from an unknown source। ओके, तो क्या करते हो, वो सारे में ये सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। अब व्हाट हैपेंस टू द मनी इन ए सस्पेंस अकाउंट, ये भी तो क्वेरी है। व्हाट हैपेंस टू द अमाउंट, व्हाट हैपेंस व्हाट हैपेंस टू द मनी इन सस्पेंस अकाउंट, इन ए सस्पेंस अकाउंट, उस पैसे का क्या होता है, दैट इज ऑल्सो द क्वेरी। पैसे क्या करते हैं, तो वो क्या होता है, जो जो मनी सस्पेंस अकाउंट में चला जाता है, इट इज नेवर लॉस्ट और इट इज स्टक फॉर एवर, कहीं कभी भी ऐसे नहीं होता, जब इट इज बीइंग स्टक ओवर देयर और इट इज लॉस्ट। ओके, इट इज जस्ट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, इट टेम्पोरली होल्ड्स द मनी, इट टेम्पोरली होल्ड द मनी। ओके, इन सस्पेंस अकाउंट इट टेम्पोरली होल्ड्स द होल्ड्स द अमाउंट। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है उस अमाउंट की, उसके बाद क्या करते हैं, उसी जिस अकाउंट में जाना चाहिए उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, सिंपल, दैट्स द। ओके, अब बेनिफिट क्या है, जिस अकाउंट में जाना चाहिए उसी अकाउंट में चला जाता है कुछ देर बाद। ओके, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सस्पेंस अकाउंट? बेनिफिट्स ऑफ सस्पेंड अकाउंट, नंबर वन, मेंटेन्स क्लीन रिकॉर्ड। नंबर टू, फैसिलिटेट्स इन्वेस्टिगेशन, फैसिलिटेट्स इन्वेस्टिगेशन।
ओके, तो दैट्स ऑल। होप आप लोग क्लियर हो गए सस्पेंस अकाउंट। तो मीन्स इन दिस वे आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द कॉन्सेप्ट, यू शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स। और कहीं भी कुछ भी डाउट है तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। Okay, unless you comment on the comment section, we cannot or we won't understand that what we have taught, or you have understood the concepts clearly or not. Okay, so you should comment on the comment section, be it positive, be it negative, not a problem. Okay, now one important question is here that I am going to write over here. एक होता है accounting period concept। ये जो भी मैं whatever I am teaching, this is a very important for the examination part of view. Let me tell you, okay, very important। accounting period concept। Okay, what is accounting period concept? Yeah, this is important, very important। Okay, accounting period concept। अब क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, क्या होता है पीरियड। पीरियड जब बोल रहा पीरियड, पीरियड का मतलब क्या है? पीरियड, पीरियड का मतलब क्या होता है? टाइम। सिंपल, एक बात याद रखो। मतलब क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, क्या होता है? इट इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल, इट इज अ फंडामेंटल। इट मींस टेक वन मोर शीट। ओके, इट इज अ फंडामेंटल concept, it is a fundamental concept in accounting that assumes, that assumes the economic life of business, the economic life of a business। हाँ, economic life of a business can be divided into, can be divided into measurable segments of time। ओके, आप एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। इमेजिन यू रन ए बेकरी, एक बेकरी है आपके पास, ठीक है। द अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट डिक्टेट्स दैट यू कांट जस्ट ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ योर बेकरी। आप एंटायर लाइफ टाइम आपको पता ही नहीं है ना, आप कितने दिन जियोगे, कितने दिन आप वो बिजनेस करोगे। तो उसको क्या यू कैन नॉट ट्रैक द एंटायर लाइफ टाइम। ओके, तो आप क्या करोगे, उसके स्पेसिफिक चूज ए स्पेसिफिक पीरियड, जैसे एक एक साल, वन वन ईयर। एक साल में कितना आपने इन्वेस्ट किया, कितना आपने अर्न किया। ओके, कितना आपने इन्वेस्ट किया, कितना अर्न किया, कितना प्रॉफिट हुआ आपकी। तो ऑल दीज थिंग्स एक एक साल का आपने निकाला, या 6 महीने का आपने निकाले, या 3 मंथ का आपने निकाले। निकाल के आपको पता चला जो फायदे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ऑल दीज थिंग्स। तो ये क्या, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ओके, यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये इफ यू हैव प्रॉफिट, तो व्हाट विल यू विल डू द बिजनेस। इफ यू आर incurring loss every time, then what will you will shut the business and you will try a different one। Okay, so that is accounting period। accounting period doesn't mean, that means आप कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे, आप करते जा रहे हो, बिजनेस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। इफ इट हैपेंस लाइक दिस ना, so you will have to sell your, yeah, land, your home, everything you have to sell। Okay, okay, because you do not know you are earning or you are losing। बस आप बिजनेस कर रहे हो पागलों की तरह, यू आर डूइंग बिजनेस 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 एंड यू डू नॉट नो यू आर डूइंग प्रॉफिट और लॉस। जब भी आपको मीन्स कैपिटल की कमी पड़ रही, यू आर सेलिंग, you are taking loan from the bank, that's all। okay, so it's better that you should, what you do, एक एक डिवाइड कर दे, क्वार्टरली आप डिवाइड कर ले, क्वार्टरली में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो यू आर अंडरस्टैंड, लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, फिर उसको आप व्हाट यू डू, यू विल इंप्रूव योर सेल्फ, यू विल इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ बिजनेस एंड यू विल बी डूइंग द बिजनेस अगेन। तो दिस आर, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। होप क्लियर हो गया। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आते हैं। एक और है, एक होता है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। आप ये क्या है, इसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट।
अब क्या होता है कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट, क्या होता है, इसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. इट इज ए फंडामेंटल assumption in accounting that a business will continue operating for the foreseeable future. Okay, on a future तक चलेगा. This means that the financial statements are prepared on the belief that the company will not be liquidated or forced to shut down anytime soon. Understood? What does this mean? Let me write it. It means it means that financial statements financial statements are prepared on the belief that on the belief that on the belief that the company will not be liquidated. Company will not be liquidated. लिक्विडेटेड मतलब क्या है, सब बेच के घर पे बैठ जाओ, ठीक है, लिक्विडेटेड हो गया, उसको लिक्विडेटेड बोलते हैं. ओके, और फोर्स टू शट डाउन, और फोर्स टू शट डाउन, फोर्स शट डाउन एनी टाइम. ओके, फ्यूचर प्लान. सो फ्यूचर प्लान कर लिया, जो मेरा बिजनेस खत्म नहीं होगा, मेरा बिजनेस डाउन नहीं होगा. तो व्हाट वी डू, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं. एग्जांपल है, इमेजिन यू ओन ए फर्नीचर स्टोर. एक फर्नीचर स्टोर है आपके पास. यू नीड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ योर फर्नीचर इन्वेंटरी फॉर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, तो देयर आर टू कॉन्सेप्ट ओवर हियर, विदाउट गोइंग कंसर्न और एक आता है विद गोइंग कंसर्न. विदाउट गोइंग कंसर्न क्या होता है, इफ द कॉन्सेप्ट डिडंट एग्जिस्ट, you would value the furniture at its potential fire sale price, assuming you might have to sell everything quickly to get out of the business. Okay, without going concern. यदि आप उतना, यदि आपकी गोइंग कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करोगे तो क्या करोगे, जैसे ही थोड़ा सा लॉस हुआ, कुछ हुआ, तो आप क्या करोगे, सब कुछ फर्नीचर वगैरह जो भी है वो सब सेल करके आप बाहर निकलोगे बिजनेस. और विद गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है, आप कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो, तो फिर क्या हो रहा है, आप सब कुछ देख रहे हो. ये दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्नीचर, दिस इज सेलिंग प्राइस. ओके, हम मैक्सिमम क्या मिनिमम हम कुछ ना कुछ लेके हम बिजनेस को चलाएंगे. अंडरस्टूड, विल कंटिन्यू ऑपरेटिंग एंड सेलिंग इट एट ए रेगुलर प्राइस और मिनिमम प्राइस. मिनिमम मतलब क्या होता है, जिसमें आपका प्रॉफिट निकल आए. अंडरस्टूड, मिनिमम प्रॉफिट, लेकिन आपका बिजनेस चलती जाए. अंडरस्टूड, यदि कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट हो. और कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो फिर व्हाट विल यू डू, यू विल सेल एवरीथिंग. फर्नीचर को औने पौने कोई भी मैंने प्राइस में बेच के और आप निकल जाओगे बिजनेस. दैट्स इट. नाउ one question is there, why do some persons why do some persons why do some persons prefer to keep their accounts prefer to keep their accounts keep their account in the form incomplete, in the form yeah, in the form incomplete records. I'll explain the question, do not worry about it. State the salient features of such records. State the salient features of such records. Okay, why do some persons prefer to keep their accounts in the form incomplete records? Okay, so incomplete records. Okay, so reasons for incomplete records. First of all, reasons for incomplete records. Number one, lack of knowledge. एक बात दिमाग में डालो, जब भी इनकम्प्लीट है दैट मीन्स क्या, देयर इज लैक ऑफ नॉलेज. सिंपल.
lack of knowledge. तो क्या what is lack of knowledge? Some individuals some individuals may not be familiar with double entry with double entry bookkeeping bookkeeping. Okay, double entry bookkeeping, the standard accounting method, double entry bookkeeping. So they might find it complex or opt for less formal way of recording finances. Okay, तो उसको थोड़ा टफ लग रहा है तो फिर क्या करें, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को. नंबर टू इज सिंप्लिसिटी. सिंप्लिसिटी. अब सिंप्लिसिटी में क्या है? For small business or personal finances, keeping track of income and expenses can be more manageable with simpler system. Okay, incomplete records might involve just recording cash transactions or keeping receipts for specific purposes. लिख लेते हैं for small business. छोटे छोटे बिजनेस है उसके लिए. For small business what? Okay, for small business, incomplete records, complete records might involve might involve just recording just recording cash transactions, or keeping receipts or keeping receipts for specific purpose. डबल एंट्री बुक कीपिंग ये सब की जरूरत ही नहीं है, जस्ट कैश ट्रांजेक्शन होते हैं उनके और कुछ रिसीट्स होते हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वॉट एवर इट मे बी. अब सैलिएंट फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. नाउ salient features of records. Incomplete records. Concept. Number one, inaccuracy. First is inaccuracy. Since not all transactions are captured, since not all transactions are captured, it becomes difficult. It becomes difficult to track true income, true income or expenses. ठीक है. So that's inaccuracy. This can lead to क्या होगा? Misleading financial information, which leads to incomplete financial information. Financial information. Number two, limited decision making. जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली यू विल हैव सम डिसीजन, यू कैन टेक डिसीजन दैट विल बी लिमिटेड. अंडरस्टूड? जैसे आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है कोई भी सब्जेक्ट की, तो व्हेन एवर यू गो फॉर द एग्जामिनेशन तो क्या होगा? आपके पास लिमिटेड नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, और उससे क्या होगा? थोड़ा बहुत ही आप लिख पाओगे, आप बाकी तो आप फालतू फालतू ही लिखोगे या अननेसेसरी थिंग्स. तो क्या होगा? लिमिटेड लिखोगे तो इन द सेम वे इट इज लिमिटेड डिसीजन मेकिंग. नंबर थर्ड,
difficulty obtaining credit, difficulty obtaining credit. Okay, मतलब क्या होता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाओ लाइक बैंक्स, ओके, दे रिलाई ऑन कंप्लीट एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ओके, व्हेन इवेल्युएटिंग लोन एप्लीकेशन। लेकिन जब आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, तो व्हाट दे विल डू, दे विल सिंपली रिजेक्ट इट। अंडरस्टूड? होप आप लोग क्लियर हो गए। आप फाइनेंस से बना डबल एंट्री बुक कीपिंग, क्या आया क्या गया एवरीथिंग, यदि आप लोन लेने गए तो एवरीथिंग द बैंक विल सी, एंड इफ दे फाइंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दे सिंपली रिजेक्ट इट, दैट्स ऑल। द डिफिकल्टी ऑपरेटिंग क्रेडिट, उधारी लेना मुश्किल हो जाता है। होप आप लोग क्लियर हो गए। नाउ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दैट विल बी डीलिंग विद, एक्सप्लेन द मीनिंग, explain the meaning of the following terms, of the following terms, of the following terms, and show how you will do deal, and show how you will deal, how you will deal with them while preparing the final accounts, while preparing the final accounts, while preparing the final accounts of non-trading concern, of non-trading concern. Number one में legacy, legacy. Number two, donation. Number three, lifetime membership fee, life membership fee, you can say, life membership fee. And number fourth is receipt of tournament fund. Number four, receipt of tournament fund. इस तरह कुछ क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में। Okay, these are the previous questions. They explain the meaning of the following terms and show how you will deal with them while preparing the final accounts of a non-trading concern. Okay, number one is legacy. आप legacy क्या है? Now first we will deal with what is the legacy. First is legacy. Legacy. अब legacy क्या? It is a money or property received by non-trading concern through the will of a deceased person. कोई मर गया, उसका एक will है, will के थ्रू से आपको पैसा मिल गया. Okay, so that is known as a legacy. Let me write the term. It is a money or property received by non-trading concern, by a non-trading concern, by non-trading concern through the will, through the will of a deceased person. Okay, अब क्या होता है, अब how will deal, अब हम डील कैसे करेंगे. ओके, तो डीलिंग करने के लिए इट इज कंसिडर्ड, डील, डील के बारे में हम बात कर रहे हैं. ओके, इट इज कंसिडर्ड a capital receipt, a capital receipt, and is not included in the income, and is not included in the income, and is not included in income.
and expenditure account and expenditure account. Okay. Instead, it is added. Instead, it is added to the capital fund. To the capital fund. To the capital fund. Okay. So that's the legacy. Number two. Number two is donation. Donation. अब डोनेशन क्या होता है? वॉलंटरी गिफ्ट और मनी ऑफ मनी और गुड्स गिवन टू ए नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. ठीक है. तो वॉलंटरी गिफ्ट ऑफ मनी. ठीक है. डोनेशन क्या होता है? वॉलंटरी गिफ्ट, सॉरी, गिफ्ट ऑफ मनी. वॉलंटरी गिफ्ट ऑफ मनी और गुड्स. उसको क्या बोलते हैं? डोनेशन. ओके. आप डोनेशन में क्या करेंगे? कैसे, हाउ टू ट्रीट दिस थिंग. ओके. आप डोनेशन दो टाइप का है. डोनेशन आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट, डोनेशन आर ऑफ टू टाइप्स. अब कौन कौन सा डोनेशन है? फर्स्ट है जनरल डोनेशन. जनरल डोनेशन. अब जनरल डोनेशन में क्या? यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जनरल एक्टिविटीज. नॉर्मल जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए जो यूज होते हैं दिया जाता है. यूज जैसे कोई पार्टी को फंड दिया जाता है, डोनेट किया जाता है, तो वो क्या करेगा? इट इज फॉर जनरल एक्टिविटीज. लेकिन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कोई अमाउंट या डोनेशन दिया जाता है, तो फिर तो वो क्या होगा? वो फ्लड में यूज होंगे, या कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ वहां पे यूज होंगे, या कहीं पे कैलेमिटी हुआ, कहीं पे वार हो गया, वहां पे फूड भेजना, या फूड शेल्टर वॉट एवर टू बी सेंट, वहां पे वो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड वो सारे यूज होते हैं. ओके. दैट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस. और ऐसे ही आपने गवर्नमेंट का आपने डोनेट किया, तो इट कैन बी यूज फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस. सिंपल. दैट्स द थिंग. यूज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जनरल एक्टिविटीज. नंबर टू, स्पेसिफिक डोनेशन. जो मैंने आपको बताया, स्पेसिफिक डोनेशन, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. तो क्या होगा? स्पेसिफिक डोनेशन क्या होगा? डेजिग्नेटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस. डेजिग्नेटेड डेजिग्नेटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस. डेजिग्नेटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस. ओके. अब ट्रीटमेंट, हाउ टू ट्रीट दिस थिंग्स. अभी ट्रीटमेंट की बात करेंगे. हम कैसे इसको ट्रीटमेंट करेंगे. ट्रीटमेंट. ओके. Treatment. How to treat these donations? If it is large amount, if the amount is large, if the amount is large, it is treated as a capital receipt. It is treated as capital. It is treated as capital receipt and added to the capital fund. And added to the capital fund. But if the amount is small, it is treated as income and credited to the income and expenditure account. If the amount is small, if the amount is small,
It's treated as income. Huh. And if they and recurring माने आते ही रहेंगे 6 6 महीने में आते रहेंगे ओके recurring it is treated as income it is treated as income it is treated as income and credit to the income and credited to the income and credit to the income and expenditure account okay this is the thing and number third is now what is the third one life membership fee life membership fee माने क्या होता है ए वन टाइम fee is paid by the member to the to become member of a non trading concern for life उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी ए वन टाइम फी ए वन टाइम फी ए वन टाइम फी paid by a member paid by a member to become a member of a to become a member of a member of a non trading concern for life जैसे आई ट्रिपल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इफ यू वांट टू गेट द जर्नल वांट टू रीड द जर्नल तो आपको क्या एक लाइफ टाइम मेंबरशिप फी दे दो एंड बी बिकम द मेंबर ऑफ आई ट्रिपल एंड यू कैन गो थ्रू ऑल द पेपर्स और जर्नल्स यू कैन रीड ऑल द पेपर्स सो दैट इज अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ठीक है कोई बिजनेस नहीं कर रहे आपके साथ दे आर जस्ट टेकिंग फॉर वन टाइम फी एंड देन यू आर अलाउड टू रीड ऑल द पेपर्स दैट्स द थिंग नाउ हाउ टू ट्रीट दिस ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट क्या है there are two common approaches. It's the capital receipt. Okay, I got the amortization. I will discuss both the things. Capital receipt. Number one is capital receipt. Capital receipt. The entire amount. The entire amount. The entire amount is treated as a capital receipt. Is treated as a capital receipt. Okay, simple. And added to the capital fund. And added to the capital fund. Capital fund. And number two, amortization. Amortization क्या है? The fee is spread over the member's estimated lifespan and a portion of fee is credited to the income. मतलब क्या the fee is spread. Let me write it. The fee is spread. Take one more sheet. Let me take two sheets. Okay. It's a long video, but you have to go through it. Okay. Every day यदि एक एक घंटा आधा आधा घंटे के पढ़ो तो it's more than enough. The fee is spread over the members over the members estimated lifespan कितने साल जिएगा उसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं and a portion is credited and a portion is credited and a portion is credited to the income and expenditure
income and expenditure account account as income as income as income. Okay, this is the way. Next is receipt of a tournament fund. Fourth, I am doing receipt of a tournament fund. Receipt of a tournament fund. तो ये क्या होते हैं? फंड्स रेज्ड थ्रू द टूर्नामेंट, उसको बोलते हैं रिसीट ऑफ अ टूर्नामेंट फंड. ओके, इसमें क्या क्या हो सकते? दो हो सकते हैं. मनी रिसीव्ड money received money received to organize a tournament or funds raised through the tournament itself. दो चीज हो सकती है. Through the tournament itself. Understood? मनी रिसीव टू ऑर्गेनाइज अ टूर्नामेंट, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए जो पैसे मिले, या फंड्स जो जनरेट हुए थ्रू द टूर्नामेंट. ओके, हाउ टू ट्रीटमेंट. ओके, okay, funds for organizing a tournament. Funds for organizing a tournament. Funds are organize a tournament. If the funds are specifically meant to cover the expenses, they are treated as liability. If the funds are specifically meant, if the funds are specifically meant to organize a tournament, then it is treated as liability. Then it is treated as liability unless used. Okay, ये एक हो गया. One is funds raised through a tournament. Funds raised through a tournament. Funds raised through a tournament. So it is treated as income and credited to the and credited to the income and expenditure account. Income and expenditure account. So that's all for today, because yeah, many more questions to be discussed. Okay, so I'll be coming with the second part of this by in a day or two. So do not worry about it. Please go all through all these questions and all this theory. Theory is very important. Unless you know the theory, you cannot solve the practical. Go through the theory, and I know that whenever we'll be solving the practical in that in a day or yeah in a week, I'll be solving the practical questions also. So it will be very very easy for you to understand. Understood? Just go through the theory. So that's all. I'll be coming with the second part in a day or two. So that's all. Thank you. All the best. Bye and take care.